Okay, hi everyone. So there was demand for business environment chapter, right? So I will just go fast. This is the business environment chapter. Um, well, this one is okay. And my voice is clear. Actually, my voice was not clear in the last one, and I don't think it will be with this one also. But that's okay. I have to cover it. It's the order of the code. Um, Let me see if I can do something to the voice so that it improves, at least improve that. Hello, hello, hello. Um, okay, just let me see. Business environment, chapter 3, learning objectives. We can read that with follow page. Hmm. After the chapter, you will be able to explain the meaning of business environment, discuss the importance of business environment, discuss the various elements of business environment, explain the economic environment in India and the government and the impact of government policies in business industry. If we see the syllabus of business environment concept and importance, describe the various dimensions of business environment, understand the concept of demonetization. Demonetization. Okay, so this is not important. This is important. So these three, and then there's demonetization. Okay. The term business environment is the sum total of individuals, institutions, and uh, where's this? Other forces that are outside the control of business enterprise, but that may affect its performance. Right? There we go. I hope everything is ready. Okay, I have not removed. So this syllabus directly, how is it remove it? Everyone writes this photo, just take the universe, subtract it from the subset that represents the organization and the remainder is environment. Wow, what a line. Thus, the economic, social, political, technological, and other forces which are create outside the business enterprise are a part of this environment. So, also the individual consumers are competing with the enterprise as well as the government, consumer groups, computers, sports, media, and out institutions working outside an enterprise constitutes an environment. So, I mean, there are various definitions that the book gives about business environment as a thing. So, the best definition, yeah, as he said, just take the universe, subtract what the organization is, and there you go, this is the environment. The important points of that these individuals, institutions, and forces are likely to influence the performance of a business enterprise, although they happen to exist outside its workplace. For example, changes in government's economic policies, rapid technological developments, political uncertainty, changes in fashion, space of consumers, and increased competition in the market all influence the outcome of a business enterprise in important ways. And also, one thing that is important, I'm not reading it from the book, is that the business should not have a control. The business can only affect its own workings. If a business can affect the controlling of something, then it's not in the business environment, it's part of business organization. So it affects the business, but it's outside its control. That is the environment, business environment. And I think it applies to philosophy as well. Yeah, and that be when people say we should not uh, be sad about the things that are outside our control. Let's leave it. All influence of our business environment, technological improvements and render existing products obsolete. So they are giving multiple examples. Political uncertainty will create fear in the minds of investors. Changes in the fashion changes to our consumers will shift the demands of the market from existing products to new ones. Increased competition in the market may reduce profit margins on the basis of foregoing discussion. It can be said that business environment has the following feature. Okay, so business environment's features, the ability to study totality of external forces, right? So these are the total, like all the external forces that are there, it is in the environment, specific and general forces. Okay, I forgot this point actually. I mean, I learned that before, obviously, but now I forgot this point, so I will also read it.
Just let me see if okay. So the voice is manageable. That is good. I think. And I'm handling comments. Let's see if the stream folder. Okay, welcome. Um, Business environment includes both specific and general forces. Specific forces such as investors, competitors, and suppliers affecting individual enterprises directly and immediately in their day-to-day working. General forces such as political, legal, technological have impact on all business enterprise and thus may affect individual from only indirectly. Okay, so specific forces uh, like affect the firm directly and general forces affect the firm indirectly. Like directly and immediately. Wait, wait, array. Okay, what is the correct pattern? Let it be direct affect individual directly and immediately. Example में highlight नहीं कर रहा हूँ. It's understandable. For example, general forces. Oh, highlighting on computer is harder than highlighting on paper. चलो इतना जानना specific and general forces के बारे में काफी है. Now there's the interrelatedness. All the different elements are interrelated, right? Um, So different elements of parts of the environments are closely interrelated. For example, an increase in life expectancy of people increase awareness of health care can increase the demand of many health products, services like soft drinks, fat-free cooking oil, and health products, milk products, and services. So yeah, they give the example. So this is also something that you need to learn out of NCRT, that's how to expand your point. When you're done with the facts that you have to put about the point, what you can do is give an example about it. That oh, okay, this happened. Let's say this is a company, and यहाँ पे ये change हो गया तो उसकी वजह से ऐसा फर्क पड़ा. Therefore, there is interval effect, right? So examples are something which can expand your um, answer to beyond even the limit to which you wanted to be, right? So yeah, let's come to the dynamic nature. Business environment is dynamic in that keeps changing, whether in terms of technological improvement, uh, such as consumer preferences, uh, entry or entry of new competition in market. Uncertainty. Business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently, as in case of information technology and fashion industries. क्या बोल रहा है? Business environment is largely uncertain and it's difficult. Yeah, it is very difficult to predict the future happening. So these green lines are basically some keywords which you can put and uske this is the keyword and uske around you can make a sentence and put it as your you know explanatory sentence to your main point, which is uncertainty. Complexity. I think my wording sometimes become like a book of already. Like I say sentences which could look like they are written in the book or something. Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend it at once what exactly constitutes a given environment. Another environment is complex phenomenon that is relatively easier to understand and parts were difficult to grasp in totality. Okay, this is the main important point. बाकी तो थोड़ी सी difficult है. So this is the good point, and
लाइक सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। ये फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ता हूँ, ओनली यहाँ तक पढ़ता हूँ, बट वो क्या करें, तो वैसे वैसे चलता नहीं। ओके, वो टोटलिटी आ गया। एनवायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। अलग अलग करके आप उसे समझ सकते हो, एक बड़ा सा बिजनेस एनवायरमेंट है उसे अलग अलग करके आप समझ सकते हो, बट एट अ सिंगल टाइम आप पूरा एनवायरमेंट नहीं समझ पाओगे एंड उसका अफेक्ट आप नहीं समझ पाओगे, वरना अगर आपको समझ में आ जाता तो आप भगवान होते। ओके, पार्ट ये सब भी होगा तो पता होगा ना। हाँ, चल ठीक है। रिलेटिविटी, दिस इज 7 पॉइंट, इतने पॉइंट बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी पूछने वाला है, बट ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिंस द फर्स्ट वन कंट्री विद ट्रेड एंड रिलेशन टू पॉलिटिकल कंडीशन के लिए यूएस और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, चाइना और पाकिस्तान सिमिलरली डिमांड और सारी में भी fairly high in India. Okay, so it's a related concept. Makes too much sense. Importance of business environment. ठीक है, जैसे पता है, just like human beings, business environment enterprise does not exist in isolation. Each business form is not an island into itself. It exists, survives, and grows within the context of the elements and forces of the environment. While an individual firm is able to, I'm reading it fast because ये इतना important नहीं था. While an individual firm is able to do little to change or control these forces, it has no alternative to responding or adopting according to them. थोड़ा सा philosophy भी समझो इससे. Take take yourself as a business. What it basically says कि आप कोई इंडिविजुअल आइसोलेटेड आइडेंटिटी नहीं हो, तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम कोई ये नहीं हो कि तुम्हारे आर पार कोई नहीं हो, यू आर लिविंग इन द सोसाइटी, सो यू हैव टू लिव विद द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। ये फ्रीडम फ्रीडम जो भी लोग करते रहते हैं, फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट, बट you need to understand that the freedom are limited by the what do you say, norms of the society that you are living in. It might be limiting, it might be condescending to you, it might be sad to you, अरे बाप रे मेरे को लिमिट्स लगाना पड़ रहा है, मैं फ्री नहीं हूँ, but this is the reality that you are subjected to the society that you are living, if you understand. And you cannot change the society. The society changes you. You cannot change the whole society. You have to live within the context of society and the what etc. Says. Yeah, so you have to respond to the changes that takes place in the society. आप खुद सोसाइटी नहीं बदल पाओगे, तो सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट? अगर कभी इतने बड़े हो जाओगे सोसाइटी तो बदल दो, गुड फॉर यू। इट इज सर्वाइवल इन द कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस ऑफ सोसाइटी, एंड ये चीज मैं फिलोसफिकली बोल रहा हूँ फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। व्हेन अ मैन इज एबल टू डू लिटिल टू चेंज, ठीक है, बहुत कम चेंज कर सकता है और कंट्रोल भी सकता है, इट हैज नो अल्टरनेट, कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं भाई, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा according to the society. A good of society means business environment. A good understanding of environment by business managers enable them not only to identify and evaluate but also to react to the forces of external to the environment. कहाँ गया? External to their farmers. The importance of business environment and its understanding by managers can be appreciated if we consider the following facts. ठीक है, अब तो फैक्ट्स की बात हो. Now we come to the points and quickly name याद रखने पड़ेंगे. It enables the firm to identify opportunities and get a first mover advantage. So identify opportunity and getting the firm first mover advantage. This is very important. Light blue or green. Yeah, opportunities are to the positive external trends or changes that will help the firm to improve our performance. तो सबसे पहले आप बताओगे अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है, ठीक है? ये अंडरस्टैंडेबल है, अपॉर्चुनिटीज क्या मतलब होता है? These are external trends or changes that will help a firm to improve its performance. चलो फिर करते हैं, ठीक है? Environment provides numerous opportunities for business success. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तो आप कहते हैं, you just need to grab one, and for needing to grab one you should understand the business environment as a whole, right? And that's what it's saying, that this is the importance of business environment. अगर आप business environment को देखते रहोगे,
तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, सो इसे ग्रैब कर लेता हूँ, एंड दैट वे यू विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड नो वन एल्स विल, बिकॉज़ वो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान से देख रहे हैं। दिस रूल सम्स द पॉइंट, बट ओके, समझ लेता हूँ। मैं खुद ही लेके आऊँगा। Each identification of opportunities helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to competitors. अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा. So yeah. For example, Maruti Udyog became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for small cars in an environment of rising petroleum prices and a large middle class population. Good. So Maruti का जैसा एग्जाम्पल दिया कि बाकी कंपनीज को लग रहा था इंडिया तो यार थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे क्या कार वार है, तो मारुति ने क्या करा, छोटी कार बना दी, कॉस्ट भी कम, प्राइस भी कम, एंड लाइक इंडियन एनवायरमेंट के लिए बेस्ट, एंड वो नेता बन गए फिर स्मॉल कार मार्केट का. ये पुरानी बात है से, आप कहाँ मारुति. Let's refer to the external environment trends and changes that will hinder a firm's performance. ओके, सो यहाँ पे मैं फिर से पहले अपॉर्चुनिटीज को बताया था, तो अब थ्रेट को बता रहा हूँ. तो अब डिसाइड अपॉन इश्यूज या सिंपल चीज है कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है एनवायरमेंट में, थ्रेट्स भी नहीं. दिस इज लाइक अ कॉमन पॉइंट व्हिच प्रोसीड्स फैक्ट बेसिकली. सो इतना समझने की जरूरत नहीं है. एनवायरमेंट अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स समटाइम्स एंड सर्व्स एज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. फॉर एग्जांपल, पता है कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेरे को लगता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी अच्छी है, इट्स लाइक द बुक इज स्पीकिंग टू यू योरसेल्फ. अगर आप ये बुक ही पढ़ने लगते हैं ना अच्छे से कन्वर्सेशनल मैनर में, और किसी को पता नहीं है कि आप ये बुक पढ़ रहे हो, तो इट विल लुक लाइक यू आर कन्वर्सिंग टू द पर्सन. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. पता नहीं क्यों होता है. एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई. एक मिनट. Okay, thank you for that comment. That voice factor can be quite beneficial for you. Maybe NCRT seems boring. Not to me, but yeah, of course the paper comes from NCRT. Um, yeah, you can do these 4 5 chapters from NCRT. I will rather do all the chapters from NCRT. But like I've studied NCRT whole life basically. So if I probably looking for other than yes, they will overcome. For example, if an Indian firm finds that for a multinational company entering in the market, Indian market, with new substitutes, it should act as a warning signal. On the basis of this information, the Indian firm can prepare themselves for new exciting threats by adopting measures as improving the quality of the product. देखो 5 पेज पे आए हैं, मेरे को लग नहीं रहा है टाइम के हिसाब से चल पा रहा हूँ. 18 मिनट हो गए, so this is not okay. तो थोड़ा स्पीड करो because I was trying to explain some things. It helps in tapping useful resources. Yeah, it is an extension to this point, I think. Okay. But yeah, environmental is a source of environmental has various resources for organizations to engage in any type of okay, to engage in any type of activity, business and enterprise assembles various resources called inputs like finance, machines, computers, parts, and water from its environment, including the financial governments and suppliers. They try to provide these resources with their own expectations to get something in return from the enterprise. The business and supplies its environment. Yeah. Supplies the environment with its outputs, such as goods and services for the customers, payments of taxes to the government, return financial investment to investors, and so on and so forth. Because the enterprise depends on the environment as a source of inputs and resources, and as an outlet for outputs. It only makes sense that the enterprise designs policies that will allow it to get the resources that it needs so that it can convert those resources into the outputs that the environment desires
This can be done better by understanding what the environment has to offer. So basically the point of tapping useful resources is that कि एनवायरनमेंट बहुत सारे आपको रिसोर्सेज दे रहा होता है जिसकी वजह से जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस का कमा सकते हो. सो दे गेव द एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि आपको फंडिंग देंगे, गवर्नमेंट जो कि आपको परमिशन देगा, एंड कस्टमर्स जो कि आपको बेसिकली प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो ये लोग ऐसे के लिए दे देते हैं आपको जो चीज को देते हैं, ठीक है, वो देते हैं इन सम एक्सपेक्टेशन. व्हाट आर देयर? इन्वेस्टर को चाहिए फंड लाइक प्रॉफिट, एंड गवर्नमेंट को चाहिए एक्सेस, कस्टमर को चाहिए अच्छा प्रोडक्ट. एंड वो आप तभी दे पाओगे जब आप इस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करोगे. दिस इज बेसिकली द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ व्हाटएवर इट सेड. Okay. So it helps in tackling useful resources. It helps in coping with rapid changes. So I think what I can infer from this book is that इसने पहला पॉइंट बनाया पॉजिटिव, सेकंड पॉइंट बनाया उसी का नेगेटिव, पहला पॉइंट तीसरा पॉइंट बनाया पॉजिटिव, चौथा पॉइंट बनाया उसी का नेगेटिव. तो देखो आपको पॉजिटिव साइड भी बताता है एनवायरनमेंट की, लेकिन आपको नेगेटिव चीजों से बचा भी देता है, which is also good thing, right? Today's business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place at a fast pace. It is not the fact of change itself that is so important as a pace of change. Now, so nice. It is the fact. It is not the fact of change itself that is so important as the pace of change. So, if you understand that environment तो change होता ही है, what it is trying to say. But the pace of change is so high कि आपको अब तो पढ़ना ही पड़ेगा environment. पहले भी चेंज होता था एनवायरनमेंट, बट अब इतनी तेज हो रही है ना, जब तक आप उसे एक्सटेंसिवली स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो कब बदलेगा. ठीक है. हाँ. Turbulent and market conditions, less brand loyalty, divisions and subdivisions, fragmentation of market, more demanding customers, rapid changes in technology. Uh, yeah, and intense global competitions are just a few of the images used to describe today's business environment. All sizes and all types of enterprises facing an increasingly dynamic environment in order to efficiently cope with these significant changes, managers must understand and examine the environment and develop suitable courses of action. हाँ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि today's increasingly dynamic the changes um, are taking place at a fast pace. Take the new highlight for later. And in order to efficiently cope with these significant changes, uh, and must understand and examine the business environment. ये लिखने वाले के लिए अच्छी बात है, लिख सकते हो इतना. एंड ये सब यहाँ पे एग्जांपल दिया है अच्छे वाले. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. चलिए क्या मतलब है. Since environment is a source of both opportunities and threats for a business enterprise, its understanding and analysis can be done on the basis for deciding future courses of action, planning, or taking training guidelines, decision making policy. For instance, an entry of new place in the market, which means more competition, may make members think afresh about the how to deal with the situation. या चूंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, थ्रेट्स भी प्रोवाइड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसको बेसिस इसके एनालिसिस को बेसिस बना के हम लोग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, व्हिच इज कॉल्ड प्लानिंग. एंड हम लोग अपने ट्रेनिंग गाइडलाइंस और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, व्हिच इज कॉल्ड पॉलिसी. I think this chapter is also going to take 10 minutes, which is a good chapter. And the final reason for understanding business environment relates to whether or not it really makes a difference in the performance of an enterprise. The answer is that it does appear to make a difference. It does appear to make a difference. Many studies reveal that the future of an enterprise is closely bound with what is happening in the environment. And the enterprise that continuously monitor their environment and adopt suitable practices are the ones which not only improve their present performance but also contribute to succeed in the market for a longer period.
तो यहाँ पर मैं सीधी बात करते हैं कि भाई देखो बिजनेस तो फालतू की बात कर रहे हो, इसका कोई सेंस है कि नहीं है। हम तो यार सेंस की है, इसका परफॉर्मेंस बिजनेस परफॉर्मेंस पे आपको पता है। एंड यहाँ पे नई स्टडीज हो रखी है, वो पता नहीं मैंने कोट वोट करी नहीं स्टडीज को, which reveal that it affects the person, like जो भी लिखा होगा, the enterprise which continuously monitor their environment and adopt suitable practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market. An example I can take of Mark Zuckerberg. पहले उन्होंने फेसबुक बनाया, फिर उन्होंने लगा टीनेज को बनाना है, इंस्टाग्राम बनाते हैं, फिर उन्होंने लगा इंडियन पॉपुलेशन बहुत व्हाट्सएप यूज करते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप लिया। अब उन्हें लगता है थोड़ा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने मेटावर्स बना दिया, है ना। So they are trying their best by identifying what are the new opportunities and what are the new threats in the business environment. अच्छा, और थ्रेड का एग्जांपल हो सकता है कि उन्हें दिख रहा था कि ट्विटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो उन्होंने अपना बना लिया थ्रेड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Dimensions of business environment, factors to the business environment, including economic, social, technological, political, legal conditions. Of course, conditions which are considered relevant for decision making and improve the performance of the environment. But in contrast to the specific environment, these factors appear in the general environment with most influence. Yes, many enterprises at the same time. However, management of a enterprise can benefit from being aware of these dimensions instead of being disinterested in them. For instance, scientific research has discovered a technology that makes it possible to energy light bulb that ओके यार बहुत एग्जांपल हैं, इतने एग्जांपल मेरे को नहीं चाहिए, कोई काम के नहीं है। मतलब पढ़ना हो तो पढ़ते रहो, बट वी आर स्टडीइंग फॉर एग्जाम, so इतना नहीं कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू से कि बिजनेस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, जो ये इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया है कि पहले बल्ब वो बन गया, ठीक है, फिर फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक एंड फिलिप्स रिकॉग्नाइज दैट this discovery had the potential to significantly affect their unit growth and profitability, तो इन लोगों ने वो घुसा दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बड़ा इंटरेस्ट रेट्स, हाँ तो ये एग्जाम्पल काम करते हैं। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, ये क्वेश्चन आता है कि ये वाला मतलब कुछ भी वो एग्जांपल दे देंगे, तो ये कौन सा डायमेंशन ऑफ बिजनेस है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स सिग्निफिकेंटली affect the demand for product services. For example, in case of construction companies, this example, automobile manufacturers, well, when you saw that uh, Ncert is boring, now I understand what you're trying to say. For example, the construction companies and automobile manufacturers, no longer terms rates and conditions. पता इसके ऊपर सकते हो, अब मैं आपसे पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई सेड कि मैं पूरा पढ़ रहा हूँ बिकॉज रिजल्ट एंड इंक्रीज कमिंग है, कंटिन्यूअस प्लान वो ठीक है, एग्जाम्पल वो ये बता रहा है कि ऐसे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर मान लो, तो वो सबको एक एक करके बता रहा है कि ये कैसे फर्क पड़ता है, इससे कैसे फर्क पड़ता है, इससे कैसे फर्क पड़ता है। तो ये अच्छी सी वो है कि आप पेपर में जाके बना सकते हो, है ना। ये पेपर में बहुत नंबर मिला है, दिस इज वेरी, ये आपको सब बता देता है। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट, तो सोशल एनवायरनमेंट includes social forces like traditions, values, social trends, society's expectations, etc. ठीक है, these are social factors. Um,
एग्जाम्पल दिया है हमने दिवाली का, ईद का, क्रिसमस का, गुरु पर्व का. इंडिया provides significant financial opportunities for greeting card companies, sweets. ठीक है, तो दिवाली के टाइम तो आपको पता ही है. तो देखो, व्हाट इट सेज इज दैट सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए. अब मैं थोड़ा सा खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, कि अगर आपको ये नहीं पता कि इंडिया में दिवाली बनती है, मान लो आप कोई फॉरेन कंपनी है, तो आप दिवाली में कोई ऑफर ही नहीं दोगे. आपका मतलब लॉस हो जाएगा उस टाइम पे, बिकॉज लोग जो ऑफर दे रही है कंपनी उससे ले लेंगे. अगर आप दिवाली को नहीं समझते तो अगर आप मतलब कैडबरी और आप दिवाली को नहीं समझते तो आपका तो लॉस ही लॉस है ना. आप ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो, आप चॉकलेट में ऐसे दिवाली से रिलेटेड कुछ कर सकते हो. कैडबरी वैलेंटाइन डे पर अपना कुछ करती है. तो दिस इज बिकॉज वी अंडरस्टैंड द सोशल इन्वायरमेंट, राइट. अगर उसे पता ही रहेगा कि वैलेंटाइन डे भी कुछ होता है 14 अगस्त को, तो वो क्यों निकालते हैं कुछ. दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ दिस, राइट. वो आपको कॉमन सेंस लग रहा होगा, बट अगेन इट्स द स्टडी ऑफ दिस एक्सटेंसिव. टेक्नोलॉजी technological environment puts forces related to scientific programs, um, scientific improvements, and innovations that provide new ways of producing goods and services of new methods and by multimedia pages. Similarly, robotics, biotechnology, food preservatives, medicine, telecommunication, and security tools have immense opportunities and threats for many different enterprises. Such intelligence were like तो नाउ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आजकल एआई का एग्जांपल आप दे सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी है. पहले के जमाने में एक वर्ल्ड वाइड वेब का बबल आया था, है ना. डॉट कॉम बबल कहते हैं उसे. तो डॉट कॉम बबल में मतलब बहुत ज्यादा गूगल वूगल को बहुत फायदा हुआ था, है ना. और जो कंपनीज ने नहीं करा, जो कंपनी ने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई, जो कंपनीज ने एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं करा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उनके साथ बुरा हो रहा है. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में और चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल जो वहाँ पे न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही हैं. अगर आप पुराना वाला अपना खेती वाला तरीका इस्तेमाल करते रहोगे तो आपका उपज ज़्यादा नहीं होगी, और उपज ज़्यादा नहीं होने की वजह से आपकी कमाई ज़्यादा नहीं होगी. Understand, so you need to know the technological advances that are happening in the country or the world, which will help you gain new opportunities or save yourself from the newer threat. Right? So this is also about the opportunities and threats. So if you can make English sentences right away, then you don't even have to, you know, go for the book language. Because if your language yourself looks like a book language, then nothing is needed, right? वैसे भी टीचर नहीं पढ़ते हैं. ओके, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर इज दैट देखो, बिजनेस स्टडीज के टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है. बहुत बड़े बड़े आंसर लिखते हैं बच्चे, वो पढ़ने नहीं बैठते हैं, वो सिर्फ पॉइंट्स देखते हैं पेपर पर और आपके कीवर्ड्स देखते हैं. ठीक है. तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी. ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि पॉलिटिक्स में ज़्यादा फैक्टर आपके समझ में नहीं आते हैं जो लोग हैं. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. पीस इन अ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर नहीं होगी तो आप वहाँ पे क्या ही तो करोगे. अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर डिक्टेटरशिप है तो वो कभी भी कहेगा आगे तू साले प्रॉफिट दूंगा और मैं तेरे को खरीद लेता हूँ. चाइना में होता है, चाइना में अलीबाबा का फाउंडर था, सॉरी जैकमा था. जैकमा ने आई थिंक अलीबाबा की फाउंड करी, तो कोई ना कोई कंपनी है जैकमा. एंड अब वो जैकमा दिखते ही नहीं, कहाँ गया, गायब हो गया, कहाँ है. बिकॉज उसने क्या करा, सीजन पे के बाद में कुछ उल्टा बोल दिया था. सो नाउ इट इज न्यू आउट.
तो अगर आप ऐसे डिक्टेटरशिप की जगह में हो तो आपको बिजनेस खड़े करने में दिक्कत नहीं है, राइट? So political stability thus builds a confidence among the business people. अच्छा हाँ ये बात भी है, अगर कंट्री जो है वो पॉलिटिकली स्टेबल है तो इन्वेस्ट करेंगे आपके बिजनेस में, है ना? Now at last there's legal environment. Legal environment is simple कि भाई देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बिजनेस करना है, कहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना है, आपकी कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, आपको लोगों से शेयर कैसे करवाओगे, कहाँ पे अपन लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ता है और इन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट। अच्छा लिखकर बैन है, अगर आप कोई लिखर की कंपनी है तो आप बिहार में लिखकर नहीं बेच सकते ना, अगर आपको पता नहीं है बेचने लगे तो पिटाई होगी, फिर उसी अंडर तो लीगल एनवायरनमेंट सीरियस होता है। हाँ, तो मैं इजी पढ़ लेता हूँ थोड़ा, खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ। The government administrative orders issued by government authorities for settlements, as well as the decisions made by various commissions and agencies at various levels and the state and local of agree to obey the law. और लॉ तो देखो obey करना पड़ेगा, right? ये सब सिलेबस से बाहर है, इसीलिए मैं इसको लाइन कर मैं फिर से बता देता हूँ सिलेबस में 36 मिनट हो गया। मैं सोचा आधे घंटे में पढ़ना है, बस डिमोनेटाइजेशन है कुछ डायमेंशन बता दी या से बस डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन में सबसे ज़्यादा बुक में लिखा हुआ है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये यहाँ पे जो चल लिखा है ना, ये थोड़े वैसे वाली चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स में थी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वही सब है। ये है भैया डिमोनेटाइजेशन, ठीक है? भैया देख लो आप, ये सब तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। नवंबर 8 2016 को मोदी जी आए, उनका बंद करो जैसे, ठीक है? 500,000 के नोट्स, लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स बाहर हो गए 86%, यहाँ पर भी लिखा होना चाहिए 86% of money in circulation in Bangladesh. हाँ, demonetization is ceasing to be legal except for few specified purposes. बट ये तो लिखना नहीं चाहिए, ये सीजन टू भी लीगल टेंडर होता है और ये हो सकता है, और किसी को 80 आउट ऑफ 80 लेना हो सकता है ये आ जाए कि लीगल टेंडर, मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि लीगल टेंडर मतलब जीते की बिल भी उससे नहीं दे सकते, तो नहीं उससे दे सकते हैं। The people of India had to deposit the unvalid currency in the banks, which came along with the restriction. आपको तो पता ही है जिनका example. In other words, placing cash withdrawals. In other words, restrictions were placed on the convertibility of domestic currency and time deposits. The aim of demonetization is very important. Option को कर करना था counterfeit use of high denomination notes for illegal activities and especially the accumulation of black money generated by the income that is not being declared to the police. Tax administration measure actually, ठीक है? क्योंकि क्या है यहाँ पे लिखा है, हाँ जिसके पास पैसा ऐसा था जो कि मतलब डिक्लेयर्ड इनकम था उनके पास, वो उनने बैंक में जमा करा दिया और मिल गए। लेकिन जिसके पास ब्लैक मनी था उसको अपनी अनअकाउंटेड वेल्थ को डिक्लेयर करने लगा और टैक्स देने का पेनल्टी रेट पे, ठीक है? पेनल्टी रेट पे उन्हें टैक्स देने का, तो ये आप पॉइंट बन, ठीक है? जिनके पास पैसे था
देखो कैश holdings arising from declared income was readily deposited in bank and exchanged for new notes. और क्या है demonetization also interpreted as shift of government and indicating the tax ये गवर्नमेंट के उसको शिफ्ट है कि टैक्स एविजन अब तो हम मेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसी टैक्स एविजन लगता हो जाता है। हाँ, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ज़्यादा लोग आते हैं। कैशलेस इकोनॉमी बन गई, कैशलेस इकोनॉमी बन गई। It is paying to one if you want to write like full explanations from the book, then this is what you can explain in the exam. Tax evasion, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी याद रखो, पूरी की पूरी याद रखो, ठीक है। ये सीधा पॉइंट बन सकता है एग्जाम का, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है 2 से 3 आंसर। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजिंग मनी इंटरेस्ट रेट पे क्या हुआ, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन कम हो गई, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया एंड फाइनेंशियल सेविंग्स भी बढ़ गई, प्राइवेट वेल्थ कम हो गई मेरे ख्याल से। हाँ, कम हो गई क्योंकि सम हाई डिनोमिनेशन रेट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हो गए, है ना, तो रियल एस्टेट का प्राइस लिखा हुआ, रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हो गए, डिजिटलाइजेशन हो गया, प्राइवेट सेक्टर सॉरी पब्लिक सेक्टर की वजह पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। आई थिंक इसको ये थोड़ा गलत है क्योंकि हाँ नीचे लिखा है ना टैक्स कलेक्शन बढ़ गया क्योंकि डिस्क्लोजर बढ़ गया, डिस्क्लोजर बढ़ गया तो आई थिंक पब्लिक सेक्टर के वेल्थ पे थोड़ा तो फर्क पड़ा ही है, बट ठीक है कोई बात नहीं है। ये है 20 मिनट का चैप्टर है, सॉरी 20-25 का चैप्टर है, 40 मिनट लगे हैं, तो बेसिकली 2 से 2.5 मिनट पर, पर क्या पर पेज क्वेश्चन भी करना है तो देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट are the external factors that affect the business directly or indirectly affect the business cannot that are not in control of the business. How does understand the business environment help in improving performance of business? यहाँ पे आप पूरा बता सकते हो, या तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सोच लो कि भाई देखो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है, लिमिटेशन सॉरी थ्रेट्स पता चल जाते हैं ताकि हम बच जाते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन प्लानिंग में हेल्प कर देता है, और क्या था डायनेमिक एनवायरनमेंट से बचाता है क्योंकि चेंज बहुत तेज हो रहा है एनवायरनमेंट में तो पता रखना पड़ता है। एक देखेंगे, एक और हाँ टैपिंग रिसोर्सेस मैंने देखा नहीं, देखो give an example to show that business environment promoting the internally protected condition in the business environment and the example अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, सोच देखो मान लो आपने कोई लिकर का बिजनेस करा, ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको ये अफेक्ट करेंगे कि देखो कहीं जगह पे पॉलिटिक्स ऐसी खेली जाती है कि हम शराब बैन कर देंगे, ना ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जो भी कंपनी चलाती है शराब का बिजनेस उनको ये करेंगे वो करेंगे, these are political things that could affect the business। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लो कोई डिक्टेटरशिप आ गई पॉलिटिक्स में,
और उसमें हम पूरी सलाह बंद करते हैं, ऊपर से नीचे तक लिया पहले आता है ना। और क्या हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो गया, टेक्नोलॉजिकल में हो गया, तो मान लो वो फर्मेंटेशन की कोई नई तकनीक आ गई, आपको पता होना चाहिए, राइट। सोशल में ये होता है कि किसी कंट्री में मान लो शराब चल रही है, तो कहीं पे वो है कि मतलब शराब पूरी बैन की गई, लोगों को रिलीजियसली फॉलो नहीं करना पड़ता है, तो ये सोसाइटी एक साथ रहती है। इकोनॉमिक का तो पता है ना, इकोनॉमिक कहाँ जाना है। इकोनॉमिक, हाँ, इकोनॉमिक ये हो सकता है कि मान लो कंट्री पूरी बहुत चली गई, कंट्री की इकोनॉमी फुल डाउन में चली गई है, तो वहाँ पे लोग शराब थोड़ी पियेंगे, उनको खाने पीने के लिए नहीं है, ऐसे कह सकता है। और Krishna furniture mart started I think blah 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 blah. इतना बड़ा नहीं हम तो स्पेसिफिक फोर्स तो बस नाम नहीं आता तुम मेरे से। मैं, हाँ, स्पेसिफिक फोर्सेस में देखो इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स नहीं होंगे। इन्वेस्टर्स होते हैं, वैसे हो सकते हैं लेकिन रिस्क नहीं है। इन्वेस्टर्स होते हैं, और और क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं, आपको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला आपका सप्लायर होता है। दीज आर डायरेक्ट स्पेसिफिक फोर्सेस। लेकिन हम एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिट। आ जाओ भैया एग्जाम्पल। फीचर्स ऑफ दिस समान नहीं है ना, देखो इतना पढ़ लिया। affect individual and directly and indirectly, हाँ, investors, customers, competitors and suppliers, ठीक है। ये होगा आपके अकाउंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।